हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे पावर ग्रिड के जो 2025 की जो रिक्रूटमेंट है फील्ड सुपरवाइजर एंड इंजीनियर सिविल के लिए, ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज यहाँ पे अपन कवर कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो एग्जाम के हिसाब से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है जो हमें प्रोफेशनल नॉलेज के लिए काम में आएंगे वो क्वेश्चंस अपन यहाँ पे कवर करेंगे। चैप्टर वाइज मैं यहाँ पे बताऊंगा, मिनिमम 10 चैप्टर्स, 10 to 15 चैप्टर्स अपन यहाँ पे कवर करेंगे जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। वैसे और एक बात बता दूं कि पावर ग्रिड के लिए फील्ड सुपरवाइजर एंड इंजीनियर के लिए सिविल की पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज कवर है। 22 चैप्टर, 270 टॉपिक्स, 7000 एमसीक्यू के साथ ये पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए होगा, व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए, क्योंकि ये कंटिन्यू अपन यहाँ पे डेली जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के क्वेश्चंस है वो अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर 1, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए अपन यहाँ पे 25 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के 25 एमसीक्यूज। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन स्ट्रक्चरल आइडियलाइजेशन अ हिंग अलाउड। तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पे, ओनली रोटेशन, नो ट्रांसलेशन। सेकंड, ओनली ट्रांसलेशन, नो रोटेशन। थर्ड, बोथ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। एंड फोर्थ, नो मूवमेंट एट ऑल। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, नो रोटेशन नो ट्रांसलेशन, बिकॉज हिंग अलाउड फ्री रोटेशन बट रेजिस्ट ट्रांसलेशन। ओके, next, second, which of the following statement is true for statistically determinate structure? तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पे, all member force can be found using equilibrium only. Second, it is always unstable. Third, deformation are ignored. And fourth, compatibility equations are needed. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, all member force can be found using equilibrium only, means statistically determinate structure can be analyzed using only equilibrium equations without requiring compatibility conditions. Next, third, in a simply supported beam subjected to uniformly distributed load, the maximum bending moment occur at. देखिए ऑप्शन है, supports, mid span, quarter span and anywhere depending on loading. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, mid span. For UDL means uniformly distributed load, bending moment is maximum at the midpoint of the simply supported beam. Next, fourth, which of the following is not an assumption in analysis in perfect truss? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है, all joint are pin connected. Second, members carry only axial force. Third, member can carry bending moment. And fourth, self weighted is neglected unless specified. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, members can carry bending moment, means in trust analysis, members are assumed to carry only axial force, not bending moment. Next, fifth, movement of interior of rectangular section about its base is. तो देखिए ऑप्शन है, BD cube of divide by 3, बराबर है बेस ऑफ रेक्टेंगल, देन BD cube of divide by 3, then BD B cube into D divide by 12 and B cube into divide by 3. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, BD cube divide by 3 means movement of interior is about the base of rectangle. Okay. Next, sixth, which of the following theorem help to compute moment of interior of composite section about a non-centroidal axis? तो देखिए ऑप्शन है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सेकंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, थर्ड रेडियस ऑफ गाइटन थ्योरम एंड फोर्थ सेंट्रोइड थ्योरम। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, because parallel axis theorem is used to shift moment of inertia to any parallel axis. Next, seventh, in the theory of simple bending, which of the following assumption is made? तो देखिए ऑप्शन है, फर्स्ट, tensile strength of concrete is considered. Second, plane section remains plane after bending. Third, shear deformation is considered. And fourth, torsion occurs simultaneously. तो करेक्ट आंसर है सेकंड,
plane sections remain plane after bending because it assumes that plane section before bending remain plane after bending. Next, 8. Torsional shear stress is a solid circular shaft is maximum at, तो देखिए ऑप्शन है सेंटर, मिड रेडियस, आउटर सरफेस एंड यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, आउटर सरफेस, बिकॉज इन सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट shear stress varies linearly and is maximum at the outer surface. Next, ninth, which method is best suited for finding slope and deflation at specific point in a beam under complex loading? तो देखिए ऑप्शन है डबल इंटीग्रेशन, सेकंड मोमेंट एरिया मेथड, थर्ड मैक्ले मेथड्स एंड फोर्थ यूनिट लोड मेथड। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ, यूनिट लोड मेथड. This unit load method use virtual work and is efficient for specific displacement calculation. Next, 10th, in the moment area method, the change in slope between 2 points is equal to. क्या बोला है? तो देखो ऑप्शन है मोमेंट डिवाइडेड बाय EI, सेकंड एरिया अंडर M of EI डायग्राम, सेकंड फर्स्ट मोमेंट ऑफ MEI डायग्राम एंड curvature of beam. तो करेक्ट आंसर है सेकंड area under the MU of I diagram because area under MU of diagram gives change in slope between 2 points. Next, 11, Euler formula is applicable only. तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट शॉर्ट कॉलम, सेकंड लॉन्ग कॉलम, थर्ड बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम एंड फोर्थ कॉलम विथ लार्ज इसेंट्रिसिटी. तो करेक्ट आंसर है सेकंड लॉन्ग कॉलम बिकॉज Euler formula assume perfect slenderness and applies to long column only. Next, second, effective length of a column with one end fixed and other free is. तो देखो ऑप्शन है L, 2L, 0.5L and root of 2L. तो करेक्ट आंसर है सेकंड 2L means length. Such column behave as its length is effectively double due to free end movement. Next, 13, which method is suitable for analyzing frames with multiple redundancies? तो देखिए ऑप्शन है स्लोप डिफ्लेशन मेथड, सेकंड थ्री मूवमेंट इक्वेशन, थर्ड मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड फोर्थ कॉन्जुगेट बीम मेथड. तो करेक्ट आंसर है थर्ड मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बिकॉज मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज इफिशिएंट फॉर एनालाइजिंग मल्टी स्टोरी एंड कंटिन्यूअस फ्रेम्स. नेक्स्ट 14, स्टैटिक इंटरमीडिएंसी इज गिवन बाय. तो देखिए ऑप्शन है नंबर ऑफ अननोन्स मींस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, सेकंड नंबर ऑफ सपोर्ट्स मींस नंबर ऑफ मेंबर्स, थर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स मींस नंबर ऑफ जॉइंट एंड नन ऑफ द अबव. तो आंसर इज फर्स्ट number of unknown means number of equilibrium equation because it's the difference between unknown and available static equation. Next 15, influence line for bending moment at the center of simply supported beam is. तो देखिए ऑप्शन है a triangle with peak at center, second a rectangle, third a trapezium and fourth linear decreasing. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट a triangle with peak at center because ILD, ठीक है, influence line of bending for beam at mid span is triangle with maximum at the center. वैसे देखे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था फील्ड सुपरवाइजर एंड इंजीनियर के सिविल की जो शॉर्ट नोट एमसीक्यूज पीडीएफ है वो अवेलेबल है. जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके डायरेक्टली आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, मूलर बर्सुला प्रिंसिपल इज यूज्ड टू. ठीक है, प्लास्टिक एनालिसिस, शेयर फोर्स डायग्राम, ड्राइंग इन्फ्लुएंस लाइन एंड फोर्थ मूवमेंट कर्वेचर रिलेशंस. तो करेक्ट आंसर है थर्ड ड्राइंग इन्फ्लुएंस लाइन. इट हेल्प विजुअलाइज एंड ड्रॉ लाइंस बाय अप्लाइंग अ यूनिट डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट 17, हॉरिजॉन्टल ट्रस्ट इन सिंगल हिंग आर्क डिपेंड ऑन. तो देखो ऑप्शन है स्पैन एंड हाइट, सेकंड सपोर्ट सेटलमेंट्स ओनली, थर्ड राइज ओनली एंड फोर्थ टाइप ऑफ हिंग. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट स्पैन एंड हाइट. हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इंक्रीज विथ स्पैन एंड डिक्रीज विथ राइज. नेक्स्ट 18,
The shape of cable carrying uniform load along horizontal span is, तो देखिए ऑप्शन है पैराबोला, सेकंड कैटरनी, थर्ड स्ट्रेट लाइन एट फोर्थ सर्कुलर आर्क। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट पैराबोला, बिकॉज cable under UDL along horizontal projection form a parabola. Next 19, plastic hinge is formed when, तो देखिए ऑप्शन है स्ट्रक्चर फिर इलास्टिकली, सेकंड बेंडिंग मोमेंट एक्सीड यील्ड मोमेंट, थर्ड shear stress is maximum and fourth deflation become zero। तो करेक्ट आंसर है सेकंड बेंडिंग मोमेंट एक्सीड यील्ड मोमेंट, मींस beyond yield moment the section behave plastically forming a hinge। Next 20, shape factor for a rectangular section is approximately, तो देखिए ऑप्शन है 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5। तो करेक्ट आंसर इज 1.5, means shape factor means plastic moment divided by yield moment, that is equals to 1.5 for rectangular section। Next 21, in stiffness matrix method unknowns are, तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पे फोर्सेस, डिस्प्लेसमेंट्स, strains and reaction only। तो करेक्ट आंसर है सेकंड डिस्प्लेसमेंट्स। The stiffness matrix relates nodal displacement to applied loads। Next 22, flexibility matrix represent, तो देखिए ऑप्शन है फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप, मूवमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप, displacement due to unit force and fourth none of the above। तो करेक्ट आंसर है थर्ड displacement due to unit force, because each term give displacement at one coordinate due to unit load at another। Next 23, in FEM shape function are used to, तो देखिए ऑप्शन है determine support condition, second interpolate displacement, थर्ड अप्लाई लोड्स एंड फोर्थ एनालाइज टाइम हिस्ट्री। तो करेक्ट आंसर है सेकंड इंटरपोलेट डिस्प्लेसमेंट, मींस शेप फंक्शन हेल्प अप्रोक्सीमेट डिस्प्लेसमेंट विद इन एलिमेंट्स। नेक्स्ट 24, लैटरल टॉर्जनल बकलिंग ऑकर्स इन, तो देखिए ऑप्शन है कॉलम अंडर एक्सेल लोड, सेकंड शॉर्ट कॉलम, थर्ड स्लेंडर बीम अंडर बेंडिंग एंड फोर्थ बीम अंडर प्योर टॉर्जन। तो करेक्ट आंसर है थर्ड स्लेंडर बीम अंडर बेंडिंग, बिकॉज इट इज अ buckling mode in beam subjected to bending in a weak axis। Next 25, the natural frequency of SDOF system is given by, तो natural frequency होता है stiffness and mass। तो देखिए यहाँ पे root of stiffness per mass, then root of km, mk and km। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट रूट ऑफ स्टिफनेस एंड मास। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ SDOF इज ओके। वैसे देखिए सिविल इंजीनियर की भी पीडीएफ अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की एंड इलेक्ट्रिकल्स की भी। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।